নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনালো নমামি ব্ৰেইন একাডেমীলৈ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰো আপোনালোকে সবে ভালে আছে আজি আমাৰ 6th ক্লাস আজি আমি ফ্যামিলি রিলেটিভস এন্ড প্রফেশনাল বিষয় ডিসকাস কৰিম বলক ক্লাসটো স্টার্ট কৰো ফার্স্ট হল গ্র্যান্ডফাদার আমি গ্র্যান্ডফাদারক হজুর বুয়া বুলি কওঁ हजूर बुआ ही इज माय ग्रैंडफादर वहाँ मेरो हजूर बुआ हुनुहुन्छ वहाँ मेरो हजूर बुआ हुनुहुन्छ ही इज डॉक्टर वहाँ डॉक्टर हुनुहुन्छ इन नेपाली डॉक्टर मीन्स डॉक्टर वहाँ डॉक्टर हुनुहुन्छ so हजूर बुआ मीन्स grandfather maternal or paternal both are hajur bua now next is grandmother hajurama waha mero hajurama hununcha she is my grandmother so waha mero hajurama hununcha she is a housewife waha grihini hununcha housewife means grihini in Nepali housewife means grihini waha grihini hununcha now next is father means bua we say in Nepali bua he is my father waha mero bua hununcha waha mero bua hununcha he is a lawyer waha wakil hununcha waha wakil hununcha so lawyer means wakil now mother means ama in Nepali we say ama she is my mother waha meri ama hununcha etia ami meri বুলি কলো যেতিয়া আমাৰ জুনে আমি কৈ আছো যে মা বা দেউতা মা মানে হল স্ত্ৰীলিংগ সো আমি মেৰি বুলি কওঁ যেতিয়া পুল্লিংগ হয় তেতিয়া আমি मेरो বুলি কওঁ সো वहाँ मेरी आमा हुनुहुन्छ she is a nurse वहाँ nurse हुनुहुन्छ in Nepali nurse means nurse so वहाँ nurse हुनुहुन्छ now elder brother we say in Nepali दाई or दाजू he is my brother वहाँ मेरो दाजु हुनुहुन्छ वहाँ मेरो दाई हुनुहुन्छ he is a musician in Nepali musician means संगीतकार वहाँ संगीतकार हुनुहुन्छ वहाँ संगीतकार हुनुहुन्छ now elder brother's wife sister-in-law so in sister-in-law we say भाउजू in Nepali we say भाउजू she is my sister-in-law वहाँ मेरी भाउजू हुनुहुन्छ वहाँ मेरी भाउजू हुनुहुन्छ she is a writer वहाँ लेखिका हुनुहुन्छ वहाँ लेखिका हुनुहुन्छ writer means लेखिका now elder sister means didi in Nepali we say didi she is my elder sister वहाँ मेरी दीदी हुनुहुन्छ वहाँ मेरी दीदी हुनुहुन्छ all relatives are elder so we use वहाँ সবে ডাঙৰ আছে সেইকাৰণে আমি वहाँ লিখি আছো হয়নে वहाँ मेरी दीदी हुनुहुन्छ she works in a bank वहाँ बैंकमा काम गर्नुहुन्छ वहाँ बैंकमा काम गर्नुहुन्छ now elder sister's husband brother-in-law in Nepali we say भिनाजु so brother-in-law means भिनाजु he is my brother-in-law वहाँ मेरो भिनाजु हुनुहुन्छ वहाँ मेरो
भिनाजु हुनुहुन्छ. He is a police. उहाँ प्रहरी हुनुहुन्छ. उहाँ प्रहरी हुनुहुन्छ. So police means प्रहरी. In Nepali we say प्रहरी. Now next is younger brother. Younger brother we say भाइ. In Nepali we say भाइ. He is my younger brother. ऊ मेरो भाइ हो. ইয়াতে আমি ऊ ব্যৱহাৰ কৰিছো. কিয় কৰিলো? ভাই আমাতকে সৰু. সো সৰু হলে আমি ऊ ব্যৱহাৰ কৰো. ऊ मेरो भाइ हो. He is a student. ऊ विद्यार्थी हो. Student means विद्यार्थी. So ऊ विद्यार्थी हो. Younger brother's wife or son's wife we say बुहारी. Younger brother's wife or son's wife we say बुहारी. She is my daughter-in-law. उनी मेरी बुहारी हुन्. उनी मेरी बुहारी हुन्. She is a journalist. उनी पत्रकार हुन्. Journalist means in Nepali पत्रकार. उनी पत्रकार हुन्. Younger sister. Younger sister in Nepali we say बहिनी. बहिनी. She is my younger sister. उनी मेरी बहिनी हुन्. उनी मेरी बहिनी हुन्. She is a student. She is a student. उनी विद्यार्थी हुन्. उनी विद्यार्थी हुन्. Student means विद्यार्थी. Now next, younger sister's husband or daughter's husband. Younger sister husband or daughter husband is जुआई. In Nepali we say जुआई. He is my brother-in-law. उहाँ मेरो जुआई हुनुहुन्छ. उहाँ मेरो जुआई हुनुहुन्छ. He is an actor. उहाँ अभिनेता हुनुहुन्छ. Actor means अभिनेता. उहाँ अभिनेता हुनुहुन्छ. Now next is mother's brother, uncle. So uncle we say mama. Mother's brother we say mama. He is my uncle. उहाँ मेरो मामा हुनुहुन्छ. उहाँ मेरो मामा हुनुहुन्छ. He is an engineer. उहाँ engineer हुनुहुन्छ. So in Nepali engineer means engineer. उहाँ engineer हुनुहुन्छ. So wife of mother's brother, auntie, we say maiju. In Nepali we say maiju. Wife of mama is maiju. She is my aunt. उहाँ मेरी माइजू हुनुहुन्छ. उहाँ मेरी माइजू हुनुहुन्छ. She is a businesswoman. उहाँ व्यापारी हुनुहुन्छ. So businesswoman in Nepali we say व्यापारी. उहाँ व्यापारी हुनुहुन्छ. Now father's brother. Father's brother we say kaka. In Nepali we say kaka. He is my uncle. उहाँ मेरो काका हुनुहुन्छ. उहाँ मेरो काका हुनुहुन्छ. He is a farmer. उहाँ किसान हुनुहुन्छ. उहाँ किसान हुनुहुन्छ. So farmer means in Nepali किसान. Okay, now next, wife of father's brother. Wife of kaka is kaki. She is my aunt. उहाँ मेरो काकी हुनुहुन्छ. उहाँ मेरी काकी हुनुहुन्छ. She is a shopkeeper. उहाँ पसाले हुनुहुन्छ. उहाँ पसाले हुनुहुन्छ. Shopkeeper means पसाले.
Father's sister. Father's sister in Nepali we say Phupu. Phupu. She is my aunt. उहाँ मेरो फुपू हुनुहुन्छ. उहाँ मेरो फुपू हुनुहुन्छ. She is a housewife. She is a housewife. उहाँ गृहिणी हुनुहुन्छ. उहाँ गृहिणी हुनुहुन्छ. Housewife means गृहिणी. Father's sister's husband. Husband of Phupu. Phupaju. Husband of Phupu we say Phupaju. He is my uncle. उहाँ मेरो फुपाजु हुनुहुन्छ. उहाँ मेरो फुपाजु हुनुहुन्छ. Now next is husband. Husband in Nepali we say श्रीमान. He is my husband. उहाँ मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ. उहाँ मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ. He is a scientist. उहाँ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ. उहाँ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ. In Nepali we say scientist means वैज्ञानिक. Now next is wife. Wife in Nepali we say श्रीमती. She is my wife. उनी मेरी श्रीमती हुन्. उनी मेरी श्रीमती हुन्. She is a teacher. She is a teacher. उनी शिक्षिका हुन्. उनी शिक्षिका हुन्. Now next is husband's wife father. Husband or wife's father, that is father-in-law. So in Nepali father-in-law means ससुरा. He is my father-in-law. उहाँ मेरो ससुरा हुनुहुन्छ. उहाँ मेरो ससुरा हुनुहुन्छ. Now next is mother-in-law. Mother-in-law means सासू. Mother-in-law means सासू. उहाँ मेरी सासू हुनुहुन्छ. उहाँ मेरी सासू हुनुहुन्छ. She is my mother-in-law. So আজি আমি ফ্যামিলি রিলেটিভস আৰু প্ৰফেশনৰ বিষয় ডিসকাস কৰিলো. প্ৰফেশনক আমি নেপালীত কি বুলি কওঁ সেইবোৰ ডিসকাস কৰিলো আৰু ৰিলেটিভক আমি কেনেকৈ কি বুলি মাতো সেইবোৰ আমি আজি ডিসকাস কৰিলো. ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল আৰু আগলৈ কোনটো টপিক আপোনালোকে চাব বিচাৰে আমাক কমেন্ট কৰি জনাব. তেতিয়ালৈ চাই থাকিব নমামি ব্ৰেইন একাডেমি. ধন্যবাদ.